Hello, my dear viewers, and very good morning to everyone. Hope you all are fine and in a good health, and you are doing your studies very well. Okay, so today I am going to discuss a very new topic, and the name of the topic is trigonometric functions. That means today we are going to discuss about the basic idea of about trigonometry, and this particular trigonometry you already that is got in your school level in class 10. So I am going to discuss the same thing here and then extend it beyond your class 10 syllabus. Okay, understood. So those who like my videos, and if you feel that my classes help you, please share my videos and also subscribe my channel, those who have not yet subscribed, or share to among your friends, so that every student can be benefited in such pandemic situation. Okay, so coming back to my class, the first there are two terms, what is called trigonometry, another is what, function. And function के बारे में आप लोगों को already पता हो गया, it is related to a variable x or whatever variable. Suppose you already got, suppose fx equal to what, x square, fx equal to what, x cube, fx equal to what, x square plus 1. These are the function of x. If I write fx equal to what, suppose sin x, or write fx equal to what, cos x, okay, or fx equal to what, suppose I am writing tan x. Suppose fx is sin x, or fx is cos x, or fx is tan x, fx is cosec x. Then such type of function involving trigonometry is called trigonometric function. We are discussing about this trigonometric function today in this class. Before going to discuss about the trigonometric function, we must discuss about what actually trigonometry is. This trigonometry is derived from the word Greek, and it's a two part. One is trigon, another is what, metron. इसका दो पार्ट है, एक ट्राइगन है, अनदर क्या है, मेट्रॉन है. और द मीनिंग ऑफ दिस ट्राइगन मेट्रिन इज मेजरिंग. ट्राइगन मीन्स मेजरिंग एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरिंग एंड ट्राइगन मीन्स द ट्रायंगल. ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल का साइड के बारे में जानने के लिए जो डिस्कशन इनिशियली मैथमेटिक्स जो लोगों ने इन्वेंशन किया था, उन लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया था, वहाँ से बाकी सारी चीज़ डेवलप हुई. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. व्हाट इज ट्राइगन, अनदर इज व्हाट, मेट्रन. ट्राइगन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. सो मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो ये इसका मतलब है. सो इफ आई से दिस इज ए ट्रायंगल ABC, then it is called angle A, this is our angle B, this is called angle C. Already you know. And the side opposite to the angle is denoted by this BC, and it is denoted by the symbol A. The side against the angle B is denoted by small b, and side against the angle C is denoted by what, C. Okay, ये एंगल A के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसको ऐसे हम डिनोट करेंगे, और एंगल C के ऑपोजिट में C से डिनोट करेंगे, एंगल B के ऑपोजिट में एंगल दैट इज B साइड B डिनोट करेंगे. ठीक है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, और यू कैन से हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस. यू विल सी, यस, दिस एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इज रियली इन्वॉल्व विद द triangle, and basically trigonometry is related to a right angle triangle, and using right angle triangle we will find all the triangles, that is, or find the side of all the triangles. Okay, there will be no problem for us. So I already told you that I am going to discuss the basic only what, basic. So since we are going to, that is know about triangles, so we must know about angles. So what actually angle is? First we define what is angle. एंगल क्या है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन. एंगल is a
measure of rotation. It is a measure of rotation, okay? Rotation of a given ray about its initial point. Very, very important. About its initial point, you have to understand what is angle. Angle is a measure of rotation. First, it is the measurement of some rotation. Okay, what rotation of a given ray? एक रे जो होता है, रे ऐसा रे होता है, रे का क्या होता है, रोटेशन की मेजर होती है अबाउट इट इनिशियल पॉइंट. सो I'm giving diagrammatically an example, you will understand better. Suppose this is the initial point, okay? Along the initial point a ray is, this is called initial line, or you can say initial site, or it is also called what? That is baseline, okay? Now, if say suppose this is the initial line, okay? If I rotate this span in this way, I am rotating this span in this way, and finally what I get, suppose this is the, ये जो लाइन है उस लाइन को उस लाइन से बेस लाइन से रोटेट शुरू किया, रोटेट होते 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 व्हाट हैपन, दिस मेज़र, वो जो मेज़र हम लेंगे, जो मेज़रमेंट करेंगे, वो मेज़रमेंट ही क्या है, एंगल है. सो एंगल इज ए मेज़र ऑफ व्हाट, रोटेशन, एंड रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल. ओके, दिस ये जो रे होती है उस रे के हिसाब से जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन का नाम है क्या है, एंगल है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ए रोटेशन. व्हाट एक्चुअली रोटेशन इज? There are two type of rotation. There are two type of rotation. One rotation is called clockwise. Another rotation is called anti-clockwise. There are two rotation that is called clockwise rotation, and another is what? Anti-clockwise rotation. Okay. So first we know that angle is a measure of a rotation of a particular ray with a particular initial point. Okay, तो एंगल के बारे में हमें पता हुआ. अभी एंगल कितने टाइप का है we have to discuss, and we already know that rotation क्या है. rotation, there are two type of rotation. one is clockwise, another is what, anti-clockwise. आपके हाथ में अगर घड़ी है तो आप this type of rotation, ऐसा अगर rotation हो, this rotation is called what, clockwise rotation, clockwise. And this type of rotation, ऐसा अगर rotation हो, it is called what, anti-clockwise. देख लिया आप लोग, this is called anti-clockwise. Naturally in mathematics and physics, anti-clockwise rotation are called positive rotation, and clockwise rotation are denoted by what? By the symbol what? Negative. Okay. Anti-clockwise rotation in physics and in mathematics, it is denoted by positive, and clockwise rotation are called what? Negative. Why? आप अगर देखें स्क्रू को, एक स्क्रू का अगर घर में आप लगाया है, उसको अगर ऐसा रोटेशन करेंगे, ऐसा रोटेट करेंगे, इफ़ यू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ऐसा अगर रोटेट करेंगे आप, मेरे हाथ में कंसंट्रेट कीजिए, दिस इज रोटेशन इज दिस, मैं स्क्रू खुल रहा हूँ, ऐसा अगर करेंगे तो क्या है, स्क्रू खुलेगा. दैट मीन्स कोई चीज़ खुलना क्या है, पॉजिटिव है. एंड इफ सपोज दिस इज द रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मीन्स आई एम फोर्सिंग समथिंग टू मेक द स्क्रू इनसाइड, स्क्रू को इनसाइड ले जा रहा हूँ कोई फोर्स के अगेंस्ट में, दैट मीन्स व्हाट हैपन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव. दैट्स वाई in a standard notation, in a standard notation क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, खुलना, और उसको क्या है, पॉजिटिव कहना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, समथिंग अगेंस्ट ए फोर्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव. ठीक है.
दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ द एक्चुअली स्टैंडर्ड होल वर्ल्ड में एंटी क्लॉकवाइज के दिमाग में कोई अगर पूछे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव। ओके, आज से आप लोग ये जान लें, एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव। हो गया। नाउ आई एम ड्राइंग टू एंगल्स, दिस इज द एंगल, दिस इज द इनिशियल लाइन, सपोज ओ इज द इनिशियल रे। उसको अगर ऐसा रोटेट करेंगे तो एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। दिस इज सपोज बी, दिस इज इनिशियल दैट इज कॉल्ड साइड, एंड दिस इज जहाँ में रुका है it is called terminal side, it is called what, terminal side, and whatever be the angle created, this angle is called what, positive angle, this is called what, positive angle, because rotation कैसा, ऐसा anti clockwise rotation हुआ, this is the rotation is what, anti clockwise, that was called, it is positive angle, this is called what, positive angle। तो आपको अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज पॉजिटिव एंगल, तो यू कैन से इफ ए पर्टिकुलर रे rotate with initial line, rotate with initial that is initial side in a anti-clockwise direction, then it is called positive angle. Another angle, suppose I am drawing another angle is what, if I create like that, so this is your baseline, okay, and you rotate this particular, वहाँ से ऐसे rotate किया तो एक angle create हुआ, and this angle is called negative angle, and this is called what, initial side, and this is what, terminal side, okay, and this angle is what, negative angle, because the rotation is clockwise, rotation is what, clockwise, so this angle is called negative। whenever I say minus 30 degree, आपको अगर मैं कहूँ माइनस 30 डिग्री, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंगल इज 30 डिग्री, मेजरमेंट इज 30 डिग्री, बट रोटेशन इज व्हाट, क्लॉकवाइज, ओके। एंड इफ आई से 45 डिग्री एंगल, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रोटेशन क्या है, इस मेजरमेंट इज 45 डिग्री, बट इट्स रोटेशन इज व्हाट, क्लॉकवाइज, and always clockwise rotation is called positive, anti-clockwise rotation is called positive, clockwise is called is what, negative. That's why minus 30 degree angle never exists. But why minus for what, clockwise rotation, clockwise rotation, जब clockwise होगा तो माइनस से सिंबल किया जाएगा, बट इसका मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री है, वो समझना ज़रूरी है, ओके। एब्सोल्यूट एंगल इज व्हाट, 30 डिग्री, एब्सोल्यूट, परम मान जो कहते हैं, एब्सोल्यूट इज व्हाट, 30 डिग्री, एंड बट फॉर द नेगेटिव व्हाट इज द मीनिंग, नेगेटिव मीन्स द मीनिंग ऑफ दैट इज द एंगल इज क्रिएटेड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन, बाय व्हाट, क्लॉकवाइज रोटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल, what is positive angle. There are two type of angle we understand, one angle is positive, another is what, negative. There are some few angles like that you already know, these are called right angle, these angle are called acute angle, and these angles are called obtuse angle, okay. This is called right angle, this angle is called acute angle, acute angle क्या है, which is greater than 0 less than 90 degree, and it is called obtuse, it is called what, obtuse angle, and obtuse angle is what, greater than 90 degree, if it is theta, then it is what, 180, lying between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो रहता है उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं, और उसमें क्या है, 0 लेस ग्रेटर देन 90, आई एम सॉरी, इफ इज थीटा लेस देन व्हाट, 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट एंगल, अंडरस्टूड। एक्यूट मीन्स व्हाट, एंगल बिटवीन 0 एंड 90, जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, 92 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, and what are the angles, suppose like 92 degree,
100 degree, 120, 135, 145, 166, all the angles are what? Obtuse angle. So I hope you understand what is right angle. A right angle means what? 90 degree. It is exactly what? 90 degree. It is called right angle. So we know two type of angle, one rotation, clockwise negative, rotation, anti-clockwise positive, and some angles are what? Right angle, acute angle, and obtuse angle. Okay. Now we are going to know about system of angles. Okay. How to measure the angle. There are two systems we are going to discuss. Measurement of angle. Next is what? Measurement of angle. Measurement of angle. How to measure the angle? So the angle is measured in two ways. One is called sexagesimal. There are two systems. One is a sexagesimal system. Another is what? Circular system. Circular system. Now sexagesimal system, in sexagesimal system, whatever with the angle is calculated, it is called in degrees. In what? In what? Degrees. And in circular system it is called radians. जो एंगल का मेजरमेंट होती है वो रेडियन में आएगा एंड डिग्री, और यहाँ में सेक्साडेसिमल में क्या आएगा? डिग्री होगा. जैसे एंगल होगा वन राइट एंगल इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. देन 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 60 मिनट्स. एंड 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड. दिस सिंबल इज डिनोटेड फॉर मिनट. दिस सिंबल इज डिनोटेड फॉर सेकेंड. ओके. ये वन राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री है. तो टू राइट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है. एंड 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड. एंड 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री. एंड देन आई विल गो टू डिस्कस अबाउट रेडियंस. सो डिग्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है. डिग्री के बारे में आप लोगों को पता है. ठीक है. तो रेडियन क्या चीज़ है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट बेसिकली रेडियंस. ओके. सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेजरमेंट measuring the angle. One is called sexagesimal system and another is called circular system. And sexagesimal system क्या है? Sexagesimal system is the angle measure in degrees and circular system में क्या है? Angle measure in what? Angle measure in that is radians. Okay. Now suppose that this is the initial ray. Okay, this is the initial ray OA. ठीक है. If I rotate one revolution, this is called what? Rotation. One revolution. This is called what? One revolution. One revolution is equal to what? How many? आपको कितना मिल रहा है? 360 डिग्री. ये इनिशियल लाइन वहाँ से शुरू होके रोटेट होके फिर आके इनिशियल लाइन में मार्ज हो गया है. इनिशियल लाइन में क्या हुआ? मार्ज हो गया है. तो पूरा जो एक रोटेशन हुआ इसमें कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री. नाउ ये जो 360 डिग्री है मिला है पूरा रोटेशन को, ये 360 पूल रोटेशन को अगर 360 पार्ट किया जाए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, हाउ मेनी पार्ट? 360 पार्ट. 360 पार्ट किया जाए तो एमोंग ये सारी जितनी पार्ट है ये सब एक एक पार्ट को क्या कहते हैं? 1 डिग्री. 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1/60 360th of a revolution.
तो आप डिग्री को क्या समझ रहे हो? एक डिग्री क्या है? इट इज़ द 101/60th। दैट मीन्स व्हाट? ये 360 डिग्री को अगर 360 पार्ट किया जाए, छोटा छोटा पार्ट किया जाए, देन दिस ऑल स्मॉल स्मॉल पार्ट आर कॉल्ड व्हाट? 1 डिग्री। ओके, एंड दिस 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। अगर एक डिग्री को अगर आप 60 पार्ट करें, एक डिग्री को अगर 60 पार्ट करें, तो एक एक पार्ट का नाम क्या है? मिनट। एक एक पार्ट का नाम क्या है? दैट मीन 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 1/60th ऑफ 1 डिग्री। 1/60th ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट, छोटा छोटा पार्ट किया जाए, तो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट आर कॉल्ड व्हाट? 1 मिनट। लाइकवाइज 1 मिनट को अगर 60 पार्ट किया जाए और छोटा छोटा पार्ट किया जाए, तो क्या कहते हैं? 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड, दैट्स वाई आई विल टेल यू 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 60 मिनट हो जाती है, और 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड होती है। ठीक है, सो ऐसा है। तो ये सारे यूनिट है इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सारे यूनिट क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम यही है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज रेडियन? वी हैव टू अंडरस्टैंड। Okay, these things you already got in school, तो उसको फिर थोड़ा सा रिवीजन किया है मैंने। रिवीजन क्या है? नया नहीं है ये चीज़ आपके लिए, ये ऑलरेडी आप लोगों को मिला है स्कूल में। सो सेक्साडेसिमल सिस्टम इज मेजरिंग द एंगल इन डिग्रीज। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? मेजरिंग द एंगल इन डिग्रीज। सो डिग्री में 1 डिग्री क्या है? इट इज़ 1/60th ऑफ 1 रिवोल्यूशन, एंड 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट? देयर इज 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ सपोज दैट दिस इज ए सर्कल। This is a circle with center at O. This is the center, okay? This is the center. And suppose this is a circle with unit radius. Unit radius means what? इसका radius क्या है? 1 है। ये जो radius का जो length है, ये same length वाला, ये length, इतना length को अगर मार्ज करें वहाँ में, तो एक आर्क मिलेगी। दिस इज द आर्क ऑफ लेंथ 1। दिस इज द आर्क। ये जो रेडियस है उसको अगर बैंड किया जाए, बैंड करने के बाद एक आर्क क्रिएट होगा सर्कल में। इस आर्क, दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क। पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? आर्क। पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क, एंड इसका लेंथ कितना है? 1। ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस इसका 1 है। सो 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल, मीन्स उसका रेडियस 1 है। यूनिट सर्कल के सेंटर में जो एंगल क्रिएट करेगा, दिस एंगल, एक एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं? ये एंगल का नाम है 1 रेडियन। इट इज कॉल्ड व्हाट? 1 radian. 1 unit length of arc create an angle at the center of a circle of unit radius. Okay, 1 unit length of an arc create an angle at center of a circle of unit radius is called what? 1 radian, and it is 1 radian is denoted by what? 1 to the power c. अगर हम लेके 1 रेडियन मीन्स व्हाट? 1 to the power c. Understood? Is the symbol of denoting रेडियन। ओके, 1 रेडियन। इसमें आर्क लेंथ अगर क्या है? 1 है तो 1 रेडियन होगा। very very important is that the radius of the circle is 1 unit. Understood? If I say this is the arc length is what? 2, इसमें 1 यूनिट है कि नहीं? फिर और एक यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट। ओके, होगा कि नहीं? और एक यूनिट ले लिया
तो ये पूरा बड़ा सा आर्क लेंथ, ये पूरा बड़ा सा जो आर्क है इसका लेंथ कितना होगा 1 + 1 = 2, और उसने कितना एंगल क्रिएट किया, ये एंगल क्रिएट किया। पहले कितना था 1 रेडियन, फिर हो गया ये ये जो आर्क लेंथ 1 है उसने क्या यूनिट कितना रेडियन करेगा, 1 रेडियन करेगा। ये कितना करेगा 1 रेडियन करेगा। फाइनली ये आर्क लेंथ 2 कितना क्रिएट करेगा, पूरा होल एंगल क्रिएट करेगा। दिस 1 + 1 = 2 रेडियन, कितना करेगा रेडियन करेगा, 2 रेडियन यूनिट होगा। समझ में आ रहा है। इफ सपोज अनदर 1 यूनिट ले लेता हूँ तो कितना हो रहा है, दिस इज 1 रेडियन, तो अल्टीमेटली कितना रेडियन हो रहा है 3 रेडियन हो रहा है। ऐसा बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है। जितना आर्क लेंथ होगा, इफ आर्क लेंथ इज सपोज आर्क लेंथ इज 5 ऑफ ए यूनिट रेडियस ऑफ ए सर्कुल ऑफ यूनिट रेडियस, तो आर्क लेंथ अगर 5 होगा तो उस हिसाब से कितना रेडियन एंगल क्रिएट होगा, 5 रेडियन एंगल क्रिएट होगा। कंडीशन इज दैट द रेडियस ऑफ द सर्कुल मस्ट बी 1। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। उसमें क्या एक समझ आ रहा है आपको। सपोज दैट दिस इज द सेंटर एंड दिस इज a circle of unit radius, and suppose that this length is what 3, arc length is what, suppose 3 I am telling, तो आप बड़ा करके लिखो, suppose what it is what 3, arc length is what 3, and suppose that ये एंगल कैसे क्रिएट हो रहा है आप देखो, एंगल दिस इज 3 यूनिट, ओके। एंगल कैसे हो रहा है, इनिशियली ये लाइन था तो रोटेशन कैसा हो रहा है, दिस टाइप ऑफ रोटेशन, सो एंगल इज व्हाट पॉजिटिव, एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ये एंगल का रेडियन में कितना अमाउंट होगा 3 यूनिट, 3 रेडियन, कितना होगा 3 रेडियन। समझ में आ रहा है। और ये 3 रेडियन कैसे मिल रहा है, 3 रेडियन इक्वल टू, यू सी वेरी ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, आर्क लेंथ कितना है 3 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है, सो 3 रेडियन इक्वल टू व्हाट 3/1, ये 3 क्या है आर्क लेंथ। सो फ्रॉम हियर वी कैन से व्हिच इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट रेडियस। सो 3 रेडियन इज इक्वल टू 3/1 मीन्स हमसे क्या फॉर्मूला आ रहा है, कोई भी रेडियन एंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या चाहिए, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इफ आई से दिस इज द सर्कल, ओके, नाउ this is what suppose angle, that is the arc length suppose -2, this is the arc length suppose 2, this is the arc length suppose 2. now this is the baseline, this is the what baseline, rotation कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और एंगल एक क्रिएट हो रहा है कि नहीं, अंडरस्टूड। जब रोटेशन क्या होगा क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्या होगा -2 होगा, एंड आर्क लेंथ इज 2, दिस इज 1, ओके, आर्क लेंथ इज 2, देयरफॉर व्हाट इज द एंगल क्रिएटेड, यहाँ में एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, एंगल क्या क्रिएट हो रहा है 2 रेडियन क्रिएट हो रहा है, ओके, व्हाट इज द एंगल 2 रेडियन। लेकिन इसमें क्या है, रोटेशन क्या है नेगेटिव है, इसीलिए आप लिखेंगे -2 रेडियन, अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे -2 रेडियन, -2 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, आर्क लेंथ 2 डिवाइड बाय व्हाट रेडियस, आर्क लेंथ कैसे एंगल क्रिएट हो रहा है, आर्क लेंथ 2 डिवाइड बाय रेडियस। ये आप लोगों को ऐसे ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि यू आर फीलिंग दैट सर इसमें माइनस क्यों नहीं हुआ, दिस माइनस सिंबल इज गिवन फॉर द ओनली रोटेशन, ओनली व्हाट a clockwise rotation, this is not -2, this minus is symbolized against the angle, and it mean is that, what is the meaning is that rotation is what clockwise. Here in this case rotation was what anti-clockwise, therefore plus 3 रेडियन, here -2 रेडियन इज इक्वल टू 2/1, ये इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या समझ में आ गया है, व्हाट इज 1 रेडियन, इफ यू से 1 रेडियन इज इक्वल टू
1 radian is equal to the angle subtended. Subtended means what? Created. Angle subtended, इसको छोड़ दो. Angle subtended by an arc of length 1 unit of the center of the circle, at the center of the circle of unit radius. अब क्या लिखेंगे? 1 radian. What is the meaning of 1 radian? If 1 radian किसको कहते हैं? 1 radian is the angle subtended by an arc of length 1 unit at the center of a unit circle. That's all. Okay, you have to write. Understood? If you go to the text, you will understand. You write the definition from the text. I just mean that what is 1 radian? 1 radian is the angle. 1 radian is the angle made by the arc of length 1 unit at the center of the circle of unit radius. Unit radius means what? 1 radius. Understood? Now we got what? Already formula, the radian angle. Radian angle क्या मिला हमें? Radian angle is equal to क्या मिला? Arc length divided by radius. ये जो radian angle मिल रहा है, this is equal to what? Arc length divided by radius. जैसे मैं कुछ example दिया था, 2 radian is equal to 2 by 1. 2 क्या है? Arc length है. Radius क्या है? 1 है. तो if suppose that this is a circle with center at O, this is its radius, okay, and suppose that this is the arc whose length is what? L, and this is theta which is in radian, then theta can be written as theta equal to what? Formula क्या है? Arc length by radius. Arc length कितना है? L, and what is the radius? Radius is what? R. So this is a very very important formula. From here you can say L equal to what? R theta. Also you can write this way. Understood? So radian is equal to, radian angle is equal to arc length divided by radius. समझ में आ रहा है? Earlier what happened? जैसे 2 radian is equal to 2 by 1. Radius कितना था? 1 था. तो ऐसा हुआ. ठीक है? So this is the ultimate formula we developed. Okay? You remember this. Using this we are going to solve few questions. Okay, so thank you. Now I am going to discuss about, आप लोगों को समझ में आ गया what is 1 radian and radian arc length और radius के बारे में जो relation है वो relation भी पता चल गया है. And now I am going to find the relation between degree and what? Radians. Relation between degree measures and radian measures. दोनों के वही एक क्या करेंगे? relation बनाएंगे. दैट मीन आप लोगों कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होंगे और कैसे आप लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे. ये सारी चीज़ आप लोगों को मिला है. फिर रिवीजन किया है मैंने, जस्ट दैट योर कंसेप्शन इज विल बी मोर क्लियर. ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड degree and radian. ठीक है, this is the topic I am going to discuss now. Now see, this is your circle, okay, and this is the center. If this is R and if your arc length is L, this is also R, then and if this is the radian angle theta, then what is the formula? Theta equal to what? L by R. You got it? Understood? वहाँ को थोड़ा सा मैं क्या करेंगे? इलास्ट्रेटेड करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, आप लोगों को समझने की कोशिश करो. ठीक है? Understood? If I increase the L, ये आर्क लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूँ, इधर आ गया, 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 आते आते इधर फिर आ गया. पूरा क्या है? आर्क लेंथ कितना ले लिया? फुल सर्कल का सरकमफ्रेंसेस होती है वो, जो उसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पूरा पेरीमीटर. आर्क लेंथ को क्या किया है? आई एम इंक्रीजिंग
L is increasing up to what? Circumference. L is increasing and up to what? Circumference. And you know what is the circumferences of a circle? It is equal to what? 2 pi r. You know that is called perimeter. Okay. So that means what happen? तो ये पूरा वन रिवोल्यूशन पूरी क्या होगा? पूरा आर्क लेंथ लेंगे. Then what will happen? You will have a helmet. That is arc length is what? That is arc length is there is L. L is increases in this way. Then what will happen? What will happen? Your L will be what? Up to twice pi r. And this full one revolution is equal to what? 360 degree. We know one revolution is what? 360 degree. So if you place theta equal to what? 2 pi r divided by what? R, then it will be r implies theta equal to what? 2 pi. That means whatever the radian angle is created, this is what? Twice 2 pi radian. That means what happen? If arc length is full circumferences, that means one revolution. It means one revolution is equal to, from here you can conclude, one revolution is equal to what? One revolution is equal to what? 2 pi radian. Understood? One revolution is equal to what? 2 pi radian. But one revolution means what? 360 degree. 360 degree, which is equal to what? 2 pi radian. Understood? Okay. Now from here you can say, so 1 degree equal to what? What will be 1 degree? 1 degree equal to one degree equal to 360 degree equal to 2 pi radian. 1 degree equal to what? 2 pi. ये रेडियन एक सिंबल है. 2 pi divided by 360 degree. Okay. And finally 2 cancel. It is what? Pi by 360 degree. This pi radian. I'm sorry. Pi by 180. Pi by what? 180 degree नहीं देंगे. ठीक है. Pi by what? 180. So 1 degree equal to what? This is the relation, one relation we kept. 1 degree equal to what? Pi by 180. Okay. Again, if you take this relation in a reverse order, here you see 2 pi radian equal to what? 360 degree implies pi radian equal to what? 360 degree by 2 equal to what? 180 degree, and 1 radian equal to pi नीचे आएगी 180 degree by pi. Okay. So this is another relation. This is 1 radian. 1 radian is equal to what? This. Okay. So this particular relation will help us how to find how to convert degree into radian and how to convert radian into degree. Okay. From this I will finally summarize how to conversion done. कैसे conversion करें, कैसे हम लोग conversion use करें to get the radian into degree and degree into what? Radian. Okay. कन्वर्शन लिखिए आप लोग. कन्वर्शन में डिग्री, फ्रॉम डिग्री, सपोज एंगल इज गिवन इन डिग्री, यू आर टू फाइंड इनटू रेडियंस. तो आप क्या करेंगे? कन्वर्शन इज व्हाट? रेडियन में जब होगा, ये रेडियन में जब होगा कन्वर्ट होगा तो आप डिग्री की एंगल के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180. ठीक है. सो डिग्री से जब रेडियन में जाएंगे तो डिग्री एंगल के साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा?
आप रेडियन में कन्वर्ट हो सकते हो। एंड इफ you convert radian into degree, what you will do, you multiply it by 180 डिग्री बाई पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो रेडियन में दिया हुआ एंगल एंड यू आर टू फाइंड इनटू डिग्री, तो आप क्या करेंगे, ये रेडियन एंगल के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 180 डिग्री, ठीक है। वहाँ से जब वहाँ तक कन्वर्ट होंगे तो रेडियन इंटू 180 डिग्री पाई, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होंगे डिग्री इंटू पाई बाई 180 रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वही आपका क्या होना चाहिए, कन्वर्शन होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक आइडिया आई हैव डिस्कस्ड टुडे इन द क्लास एंड what we already know from the class, that is observations are what we must first we know about angles, then we know about what type of the angles, positive and negative angle, and more other three angles, right angle, acute angle, obtuse angle, and then we know the that is a system of measuring the angles. One system is sexagesimal, another is what circular, and from sexagesimal system it is called measuring the angle in degree, and circular system measuring the angle in radians. Then we want to know, then we know that is clear about what is radian and what is 1 radian, and then we find the relation between radian angle, arc length, and that is radius, that is theta equal to L by R, and then find the relation between what degree and measure how to convert degree into radian and how to convert radian into degree. So this is the there is a particular class we already know about these few things, and it will help us in next class or next coming classes to solve the problems. Okay, so you go through the videos from the beginning to the end thoroughly such that you understand every सिंगल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगी। आप कोशिश कीजिए और ध्यान से वीडियो देखिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू डू येट नॉट सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियोस यू कैन गेट द information. Okay, so thank you very much, thank you, all the best.